Welcome everyone. I hope you all are good. So students, my today's video's topic is simple paper presentation with simple marker and cut marker. ओके, तो मैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप सिंपल मार्कर से किस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए मुश्किल होती है लिखने में बोर्ड में, जब उनको कट मार्कर से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं कट मार्कर 604 मार्कर है जिससे मैं प्रेजेंटेशन करूंगी और सिंपल मार्कर से। ठीक है, तो हमने वीडियो स्टार्ट करती हूँ।
स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो रही। अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्टिव टाइप कट मार्कर से, सो मैंने आपको बताया ना, कट मार्कर ऐसे रखना है जिसकी जो मिडिल से कट हुआ हो। देन यू हैव टू ड्रॉ लाइन, ठीक है। फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, फिर डबल लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताना था कि आप सिंपल मार्कर से किस तरह लिख सकते हैं एंड देन कट मार्कर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।